Hello, students. Today I'm back with a topic that is germination and what is a seed and how do the seed germinate. So, what exactly a seed contain? When we say what do a seed contains a dormant embryo. And in the dry seed, the embryo is always in active state. It can be very well studied or seen whenever you look into the seed. You have the seed at home, everything you are eating there in a dormant state, and whenever you give them the suitable conditions, they will grow into a new one. As for since you see the sprouts, whether it is of a bean, moon bean, chana, gram seed, so when you give them the proper humidity, proper temperature, proper water, what happens? The plumule and the radicle, means the stem or the leaf portion, is very well germinated after some time, and what we call the proteins, which the sprouts which are very well rich in the protein. So today we will read about that, what is exactly the germination. See here, very well seen how this seed get germinated. So when we say that the seed get germinated, we can see the seed over here. जब तक साइंस आप प्रैक्टिकली बाहर नहीं देखेंगे बेटा, तब तक आपको साइंस समझ में नहीं आएगा। बहुत कॉमन सा है, आप फ्लावर्स दुनिया भर के पढ़ रहे हैं, नीट स्टूडेंट्स आर स्टडिंग द फ्लावर, द टाइप्स ऑफ फ्लावर, एंड व्हेन आस्क्ड अबाउट द एनवायरमेंटल, बाहर कोई फ्लावर हो रहा है या उग रहा है, उसको बोल के जस्ट चेक इट आउट व्हाट टाइप ऑफ फूड दिस फ्लावर इट इज, they don't know the name also of that particular flower. So what is the essentiality of reading that particular topic if you are not at all giving the answer to the nature itself? आपको पता ही नहीं है आसपास में क्या लग रहा है, किताबी कीड़ा बनना जरूरी नहीं है. Okay, just turn on your switches around you, whatever the things are here, you will be able to learn and remember them. So here I am going with a topic that is the germination. So coming to the topic, that what is the germination? Germination always starts with the seed. So when we say, आपको अगर सीड लगाना, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, whenever the dry seed consumes oxygen and give out carbon dioxide, both with an extremely very minute quantity, they release some heat also. When placed under the certain conditions, the dormant embryo awakens. It means that that particular seed awakens, giving it a very active stage and then growing into a seedling. So now what is the germination? It is a formation of the seedling developed into the embryo. Seedling developed from an embryo. Okay ji, a seed. Now what is a seed exactly is? A seed is a protective package containing a miniature, है ना, उसके अंदर में, and that is called as an embryo. Question can come, what is it and how, or what is the outer covering called? Outer layer, ये आपने पहले भी पढ़ा topic, the seed coat, it is also called as the testa, which protects it or act as also as the food source. Coming to the next, then embryo, what is a baby plant itself consisting of a radicle and plumule. Radicle, which is a future what? Root, and plumule is a future stem. Okay, and radicle, the embryonic root, and plumule is the. Now what is actually the cotyledon? Cotyledon means the leaves. Okay, the seed leaves that store the food for the embryo, providing initial nourishment. Important parts are beta, take care of it. Seed coat, testa, a tough protective covering that guards the embryo. Then coming to the next one. Now what we say here is that what is seed dormancy? अभी मैंने बात की dormancy की. Dormancy means, what is dormancy? Dormancy means that when the seed undergoes certain conditions due to which it becomes
डोरमेंट फॉर मतलब छुप जाता है, उसके अंदर का जो ग्रोइंग एज है वो छुप जाता है, दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम जर्मिनेटिंग इवन अंडर द ऑप्टिमल कंडीशंस, and the survival mechanism will only grow when they have a right time, or the right time of the light, the cold, the temperature, which will help them to break this dormancy. Then we talk about what are the conditions which are necessary. बेटा ये क्वेश्चन जरूर बनता है, बट इसके अंदर से जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं कि what exactly is, so we say that the conditions necessary for germination, three conditions are there. Conditions necessary for germination. What are they? It is the water, बहुत जरूरी है water. Then is the oxygen for growing purposes, for breathing purpose, and the suitable temperature. This is all for you, beta. Try to just go with the fast forward also. At least आप दो तीन बार जब सुनेंगे आपके अपने आप पॉइंट्स दिमाग में आ जाएगा. So when we talk about the water, पहला पॉइंट लेते हैं अपन water का. Water is from the environment itself. तो क्या है, नेचुरल कंडीशन में वाटर है. अब वाटर का काम क्या है, वाटर सबको बोलेंगे जी बताओ यूजेस ऑफ वाटर क्या होगा, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि हाउ द वाटर इज गेटिंग एब्जॉर्ब. ये पहले पढ़ा है, कहाँ से होता है क्वेश्चनेबल. हाउ द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, by the surface, and which consists of a small pore which is called as the, क्या बोलते हैं उसको, micropyle. Okay, through this region it absorbs the water, important one. Now what happens when it the water is being absorbed, the seed swells, ऐसा ही होता है, and the seed coat, that is the testa, get ruptures, ऐसा ही होता है, testa ruptures, which will then give rise to the cotyledon or the elongating radicle together with the plumule. ये एक बोल सकते हैं कि फॉर्मर फंक्शन हुआ वाटर का, बहुत इंपॉर्टेंट. अब सेकंड फंक्शन क्या है, वाटर का फंक्शन है वॉट एवर द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, chemical reactions that takes place, it is just due to this together. क्यों? क्योंकि chemical reaction में whatever the enzymes which are present there, they are stored in the cotyledons, it will converted into a dissolved form. Okay, and which can be utilized by the growing embryo. हम क्या बोलते हैं कि chemical reactions, enzymes, these all are present in the seed itself. मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में हूँ. And what happens from the seed, whenever the water is there, it makes them diffusible so that it can be utilized by that growing what seed. Okay, so इसलिए वो जो बोल रहे हैं ना, softening of that particular seed due to which the outer and the inner layer get swollen up, that process is called as imbibition. So we say the essential for the activating enzymes and softening the seed coat. Seed coat को क्या बोल रहे हैं हम, testa. Okay, so the process is called as imbibition, very important over here. Okay, now when we talk about the oxygen, oxygen का function क्या है, oxygen is both in a very low and what we say high temperature पे दोनों तरफ से, but during the germination there has a rapid cell division and cell growth, due to which it requires energy, and it is only by this respiration that it breaks down the stored food to provide the energy for the growth. Okay, now what is the third, oxygen का इतना नहीं है, but this is very important function of the water here. Suitable temperature का क्या है, very high and low both temperatures are suitable नहीं. A moderate warm temperature, that is 25 to 35 is suitable for both, किसके लिए, grow करने के लिए, as well as grow करने के बाद में whatever the enzyme gets stored at this particular temperature will efficiently what help that particular seed to germinate. I think so till here clear है. मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ यहाँ पे. सी रोल ऑफ वाटर, प्राइमरी ट्रिगरिंग द जर्मिनेशन. मैंने पहले क्या बोला, प्राइमरी सबसे पहले वो ट्रिगर करता है, अब उससे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर थ्रू द प्रोसेस इम्बाइबेशन. क्यों, आउटर लेयर, जैसे हम सीड देखते देखना आउटर लेयर स्वेल हो जाती है ना, तो यहाँ पे वाटर, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द swelling and rupturing of the seed coat, and this is called as the imbibition. तो अब imbibition की वजह से हो क्या रहा है,
एंडोस्पर्म में हमने बात की थी सीड के पार्ट में, एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ द एक्टिवेटिव एंजाइम्स ड्यू टू विच it get breakdowns and form the diffusible form or diffusible form for the growing embryo. Then what is the role over here of the oxygen? जल्दी जल्दी से कर लेते हैं. मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है ड्रामेटिकली, क्योंकि जब भी वो एक्टिव स्टेट में आएगा तो क्या होगा, तो सीड ब्रीथ्स oxygen from the air pockets in the soil to burn what its stored food, releasing the energy. Then coming to the next one, that what is the temperature role here? Each seed needs a proper temperature, that is why what is an optimum temperature, 25 to 35, which will help for the enzyme also to work as to, देखो लिखा है यहाँ पे, while temperature that are too high can denature, मतलब original nature जो enzyme का उसको वो खराब कर देगा, so denaturing and halting the germination process. So optimal temperature is required for the growing of the seed. All the three roles are clear over here. Then coming to the types of the germination, two types of germinations होते हैं हमारे, एपीजियल एंड हाइपोजियल. अब ये भी आप देखेंगे जब सीड आजकल बहुत जल्दी से आपको, आप पी, अगर पी का देखते हैं, या कॉटिलिडॉन्स में आप मूंग बीन ले लीजिए और एक चना दाल ले लीजिए, और आजकल बहुत अच्छे से आफ्टर द बीट हार्वेस्टिंग यू कैन सी द मेज का शुरू हो जाता है. तो व्हाट, जस्ट सी, बाहर जाके एक सीड डाल लेना, आपको डालना एक छोटे से पॉट में, आप देखना हाउ इट ग्रोज. नाउ हियर इट इज, व्हेनेवर द एपिकॉटल, एपिकॉटल देखो एपीजियल है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हेनेवर द एपिकॉटल elongates the cotyledon remain underground. ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है, whenever the epicotyl, the cotyledons की बात होगी, seed leaves are pushed above the ground. seed leaves जो हैं वो क्या करेंगे, ग्राउंड के अबव वाली फीचर में आ जाएंगे. सीड लीव्स विल कम अप, इस तरह से. तो जब ये सीड लीव्स ऊपर आ जाएंगे तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द above the ground. That hypocotyl stem part will be below the cotyledons. The hypo वाला part जो है वो क्या होगा, वो सीड के नीचे पोर्शन में ही रहेगा. So that example is of the bean and the castor one. Hypogeal, hypo, ठीक है, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब, तो इन रिलेशन टू व्हाट आप उसको याद रखेंगे, कॉटिलिडॉन, सीड लीव्स के. सो एपी मतलब ऊपर, सीड लीव्स कॉटिलिडॉन सीड के ऊपर चला गया, और व्हेन वी से हाइपोजियल, इन दिस कंडीशन द कॉटिलिडॉन रिमेन बिलो, हाइपो मतलब नीचे, तो यहाँ सीड लीव्स क्या होंगे, ये नीचे ही रहेंगे. ये सिर्फ क्या, हाइपोजियल कंडीशन, या एपिकॉटल स्टेम पार्ट अबव एंड इलोंगेट पुशिंग द प्रीम्यूल अपवर्ड्स, एक्सटेंडिंग, एग्जांपल है पी है उसका, ग्राम एंड मेज कंडीशन. ठीक है, तो बीन और पी में यही फर्क है, पी हमारा हाइपोजियल कंडीशन से, यहाँ पे आपको धीरे धीरे क्या होगा, प्रीम्यूल इस तरह से ग्रो. अगर ये सीड है, इसको मैं यहाँ से बताती हूँ, सीड ग्रो किया यहाँ पे रेडिकल स्टेट में, इस तरह से रूट ग्रो करेगा, रेडिकल फ्यूचर. अब व्हाट हैपेंस, यहीं से जो प्लूम्यूल ग्रो किया इस तरह से, लीफ वाला पोर्शन, as now it will get erect, the leaf portion will get erect and this way रूट वाला पोर्शन बाहर आएगा. ये था हमारा पी का. अब वहीं पे हम एपिजियल वाली कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, कि एपिजियल कंडीशन में हम बोलेंगे कि एक बीन सीड क्या किस तरह से करेगा. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सीड ये रीजन है, यहाँ पे क्या होगा, सीड विल halfway will come on the ground, okay, and this way it will grow, the radical portion will grow, and certainly the second stage में ये seed इस तरह से portion होगा, ये cotyledons इस तरह से फिर निकलना शुरू होंगे, and stem, ये देखो यहाँ पे क्या, stem बाहर आ चुका है, and this radical portion है ना. तो यहाँ epicotyl मतलब leaf, ओके. देन आपको एक ड्राई से भी दिखेंगे जो लेटर पोर्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज अ हाइपोजियल कंडीशन और द हाइपोजियल कंडीशंस ऑफ दिस. सो एपी मतलब, एपी से ऐसे ही याद रखो आप कि सीड लीव्स जो है वो अबव ग्राउंड पुश कर दिए, और हाइपोजियल मतलब उसको नीचे ही रहने दिया ग्राउंड में. और सबसे अच्छा देखने का तरीका ये है कि जब भी आप वो देखेंगे, आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि वो सीड किस तरह से ग्रो कर रहा है. ओके जी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, इन दोनों का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं. सी हाइपोकॉटिल फॉर्म्स अ हुक एंड पुल्स द cotyledon and plumule above the soil surface, okay, and the cotyledon often turn green and perform photosynthesis rapidly before withering away as the true leaves
develop. This type of germination is common in dicots like beans. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। वो ग्रीन किस तरह से एक्ट कर रहा है, उसके फोटोसिंथेसिस की तरह, वो लेटर ऑन वो विदर अवे होता है। और वहीं पे हाइपोजियल, हाइपो मतलब नीचे ही रहना, तो द कॉटिलिडॉन स्टे अंडरग्राउंड सर्विंग ओनली एज अ फूड सोर्स, बाकी कुछ नहीं। तो उसमें एपिकॉटल क्या कर रहा है, द एपिकॉटल इलोंगेट पुशिंग द प्लूम्यूल आउट ऑफ द साइड एंड द प्लूम्यूल इज ऑफन प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ दैट इज कोलेप्टर इन द मोनोकॉट लाइक बीज, है ना। बड़ा देखना आउटर कवरिंग होती है मेज के सीड में। सो इट इज मोस्ट कॉमन इन द मोनोकॉट्स एंड वेरी लेस इन द डाइकॉट्स। थर्ड टॉपिक जो उसमें आता है दैट इज द वीवी पेरिस, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवी पेरिस जर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूजुअली मैंग्रोव प्लांट्स में, जो सलाइन वाटर में मैंग्रोव मार्शी एरियाज में रहते हैं, मैंग्रोव अगेन ऐसे। देन viviparous is a unique type where seed germinates while still attached to the, see here, this seed is still attached to the parent plant and it is starting to grow at this, and they, after getting this condition, they droop down and form into a new plant. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, राइजोफोरा, राइजोफोरा एंड अदर इज द सोनारेशिया। ये 100% क्वेश्चन है, whether it is of example or the term itself. So mark कर लेना इसको, whatever is there. So seed germination here, what happens inside the fruit while it's still attached to the parent plant, because viviparous हम वैसे ही पढ़ते हैं producing the live young ones, तो ये उसी का ही एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सीडलिंग क्या होता है, स्टेज होता है ग्रोथ का, फ्रॉम वेयर द सीड द प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड पार्ट। ओके, and germination है any part of the plant that ends up forming a seed. So till here this is the topic of the seed beta. अगर एक क्वेश्चन आता है कि an experiment is set up with the 4 seeds under different condition, which seed will germinate, एक क्वेश्चन है आपके लिए, dry seed at 25 with oxygen, wet seed at 25 with the oxygen, wet seed at 5 degree with oxygen, and wet seed at 25 without oxygen. Please give the answer for it. Thank you, hope so you'll like this video. Do like the video, इतना तो बनता है, एटलीस्ट इफ आई एम गिविंग द एफर्ट्स यू कैन लाइक द वीडियो, एक तो बटन दबाना है, ठीक है। थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट